Ranjan Sharma, glad to see you also here. Mangat, fantastic. Awesome. So आज का जो टॉपिक है हमारा, विल निफ्टी रिच 26,000 बिफोर 2025. We are going to see if that's going to happen. It's always fantastic to connect with each one of you on this Friday at 4 and to see that if we are. So आज का जो if we are going to be, where are we headed. लेकिन उसके पहले आप में से कौन कौन लोगों ने मॉर्निंग ट्वीट्स को फॉलो किया था? ओके, भौतिक पटेल आपने त्रिशूल ज्वाइन किया है, लवली। मॉर्निंग ट्वीट आप लोग फॉलो करते हैं क्या? ट्विटर का लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। मॉर्निंग ट्वीट मेंशन्ड वेरी क्लियरली दैट देयर वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट, कि यार मार्केट में बाइंग आ नहीं रही है, गड़बड़ लग रही है, होना है तो आज ही होना है। ओके, 24,850 का एक लेवल था। 24,850 अगर निकल जाएगा तो एक अप मूव शुरू होगा 24,920, 24,5,020 तक का। ये था मॉर्निंग में ट्वीट। अमेजिंग मूव। एंड इनफैक्ट मैंने ये भी ट्वीट किया था कि अभी ट्रेल करो, अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करो, राइड करो। एंड 300 पॉइंट, नियरली 250 पॉइंट्स फ्रॉम 24,850, निफ्टी gave a very fantastic move on the upside of from 24,850 level. This was phenomenal run that we can clearly see that, and it has been simply spectacular. And overall, if we look at the market scenario, I do not think this market is moving down, क्योंकि यहां पर मेरा अभी जो सीएनबीसी पे इंटरव्यू भी था, आई मेंशन दैट मार्केट्स आर क्लाइंबिंग अप ऑन द वॉल ऑफ वरी। वॉल ऑफ वरी का मतलब होता है कि देखिए ना, सिंपल सा मैं एक चार्ट आपके सामने रखता हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस, एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, यू कैन जॉइन मी ऑन द जूम प्लेटफॉर्म। यहां पर मैं लिंक शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में, जूम पे जुड़ जाइए। ओके, यू कैन जस्ट जॉइन मी ऑन द जूम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिए। एंड ये चार्ट रखता हूँ, वो चार्ट रखने के पहले एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप फटाक से वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको ये मार्केट रिलेटेड अपडेट्स खाली ट्विटर पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, बल्कि आपके व्हाट्सएप पे भी मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर अक्रॉस द क्यूआर कोड वेरी वेरी क्विकली, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ahead. I'm going to share across something very important with you all today. Very very interesting chart. I'll share it across with all of you. And यहाँ पर शेयर आप कर पा रहे, देख पा रहे व्हाट्सएप कम्युनिटी? अगर आप जुड़ गए तो एक थम्स अप दे दीजिए मुझे बहुत ही क्विकली। गिव मी अ बिग थम्स अप दैट वी यू हैव जॉइन्ड द व्हाट्सएप कम्युनिटी। ओके, फैंटास्टिक, आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो आई जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग हियर। फैंटास्टिक। एक पोल भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ से, just to ask you which is the trend, sorry, what is the trend for Nifty in the coming week? What is the trend in coming week? Is it up or down? ये poll Zoom पे हो रहा है, people watching on YouTube. I've started making short videos on YouTube and Twitter. If you're liking those videos, do not forget to subscribe, like and share. Put your comments down there. उससे मुझे पता चलता है कि आपको जो शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाए वो पसंद आ रहे हैं, वेरी क्लियरली। और मैंने कल के एक वीडियो में बताया था टू स्टेज कंफर्मेशन की टेक्निक, देखा था आप लोगों ने? ओके, एंड डिड यू सी हाउ फैंटास्टिक टू स्टेज कंफर्मेशन टेक्निक इज एज पर नियो वेव आउटलुक? पोल मैंने लिया है, पोल में आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड। नाउ आई एम एंडिंग द पोल वेरी क्विकली एंड आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स विथ ईच वन ऑफ यू ओवर हियर। ओके, 83% people are bullish. That's a thumbs up to the market. Okay, lovely. सो टू स्टिच कंफर्मेशन टेक्निक्स नियो वेव के बारे में मैं बात करूंगा। और क्या हम 26,000 पे जाएंगे? नो वन डेयर टू टॉक अबाउट 25,000 व्हेन द वॉर हैपेंड। आई टॉक्ड अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट 26,000। नो वन इज डेयरिंग टू से दोज लेवल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट। एंड बिकॉज द रीजन बीइंग, it actually works. This is the science which actually works. And so I'm talking about these levels right now. I'm opening up a chart which I want to show it across to each one of you, which will be published in our monthly research. And बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है इसमें। यहां पर everyone is able to see this chart? Okay, दिख रहा है आपको?
ओके, यहां पर अगर आप देखोगे ट्रम्प का टैरिफ हुआ, लुक एट व्हाट हैपेंड पोस्ट दैट, देन यू कैन सी पहलगाम terror attack, you can see Operation Sindhu, and you can see ceasefire violation. You can see ceasefire क्या हुआ? You can see Israel-Iran war. Everyone is able to see this chart here. I'll reshare it across. I'll reshare it across for people who are not able to see the chart. You can see all of those things again on the chart. Fantastic. So we can clearly see when you're looking at this chart, there has been the tariff, Pahalgam terror attack, Operation Sindoor, ceasefire violation, ceasefire, Israel-Iran war, and we can clearly see where are we right now. It is mentioned Nifty is climbing the wall of worry. Can you see? Wall of worry मतलब क्या होता है? यार डर है, इवेंट है, इतना कुछ हो रहा है, and market has continued to do what it is supposed to do. So we can still move higher, right? Despite of the event. You know, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 3 दिन पहले मैंने मेंशन दैट यार ये 24/460 ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड आई थिंक मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप. यू नो, ट्विटर पे लोगों ने लिखा कि आर यू इनसेन, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, डू यू नो क्रूड प्राइस इज अप बाय 6% एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मार्केट रैलिंग. क्या हुआ भाई, क्रूड प्राइस नीचे आया क्या? एंड स्टिल द मार्केट इज वेयर इट इज सपोज टू बी. क्यों? क्योंकि भाव भगवान छे, समय बलवान छे. दिस मंत्र पीपल हैव फॉरगॉटन. दे थिंक इवेंट ड्राइव्स इट. Event can result into volatility, short term spikes, but मार्केट करता वही है जो उसे करना है. आप और हमारे सोचने से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट चलता है उसके खुद के सोचने से. दिस इज दिस इज हाउ इट फंक्शन, दिस इज हाउ इट लिव्स. एंड नियो वेव जो हम स्टडी करते, इट्स द लेंस of the market. It helps us to understand what's happening around. So Nifty, despite of all the events, has been climbing the wall of worry, and you can see it here on the charts. Price is above 25,000 despite of Israel, Iran war. उसके बावजूद भी prices are where it is supposed to be. So what is next? Will we touch 26,000? क्या लग रहा है आप लोगों को? जाएंगे क्या 26,000 तक? लगता है क्या ऐसा? What is the basis? What is the rationale? So what I always ask is, what is the rationale? Are we headed towards that level? But what basis? Just because एक दिन बुलिश हो गया तो हम ऊपर जाएंगे? नहीं, वैसा नहीं. लॉजिकल साइंटिफिक वे से हम डिस्कस करेंगे, हम रैशनल वे से सोचेंगे. अगर हम सबके जैसे सोचने लगे तो हम पैसा नहीं बनाएंगे. ओनली 10% ऑफ द पीपल आर मेकिंग मनी. आर यू विथ मी? एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मेकिंग मनी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अगर ओवरनाइट, और एक और चीज का आपको ध्यान क्या रखना है, अगर ओवरनाइट कुछ आ जाता है, ओवरनाइट सडनली कुछ आ जाता है, तो पॉसिबल है कि इवेंट आ गया वापस से, तो हो सकता है हम नीचे आ जाए. लेकिन जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, ये लेवल दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द की लेवल विच इज बीइंग प्रोटेक्टेड एट एवरी सिंगल टाइम. एवरी सिंगल टाइम, दैट्स द की. इफ दिस लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी आर नॉट मूविंग डाउन. एक चीज है. That is how I'm looking at the chart. Now, if I come to the neo wave aspect of it for deriving targets, बहुत simply मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा आज आवरली टाइम फ्रेम पे, विच इज प्योर नियो वेव. हम एलियट वेव की बात नहीं कर रहे अभी के लिए. मैं प्योर नियो वेव के ऊपर आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं. आई एम गोइंग टू शो इट अक्रॉस टू यू. Okay, and let me just share that across over here.
Okay, are you able to see this chart, every one of you? इस चार्ट में मैं एक सिंपल सा ये नियो वेव है विच आई कॉल एज अ जीपीएस ऑफ द मार्केट। जीपीएस ऑफ द मार्केट का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आप इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मंडे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली and if you do not know how the path is going to be, you will be very anxious. But if you know the probable path, okay, probable path, people also talk about कि नहीं ये कल का कल ऐसा ही होने वाला। आई नेवर से डू दैट, आई नेवर एवर क्लेम 100% सर्टेनिटी के साथ, बिकॉज मार्केट नेवर मूव्स ऑन 100% सर्टेनिटी, एंड यू एग्री विथ मी ऑन दैट। मार्केट इज ऑलवेज प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब this is how it looks like. Now, there is a pattern. Okay. What pattern I'm talking about right now? I'm talking about a pattern in NeoWave, which we call as a running correction pattern. Let me draw it on a whiteboard and then I come to this chart. Then I'll come to this chart. Let me just draw it on the whiteboard right now. I want to teach you something very interesting. And we are only looking at one of the pattern. Neo has many such patterns. I'm only looking at one of the patterns and I'm going to explain it across to you कि ये पैटर्न जो आप देखोगे ये इतना इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न के बेसिस पे हम कैसे ट्रेड निकाल सकते हैं। आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड, एवरी वन ऑफ यू? ओके, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है मेरा? ओके, awesome, fantastic. So what is GPS? So I say Neo as the GPS. When I talk about the GPS of the market, what I mean is that suppose if there is a up move, a wave movement which happened on the upside. After the wave movement, there is a correction down, correction which happened this way. Okay. And then here. Does it look like a Nifty chart to you? All of you? दिख रहा है? Can you see this? So this is the first wave. Let me call it as A or let me call it as 1, whatever. It can be wave A or it can be wave 1. This move on the downside was W. Okay. This move was possibly wave X here, which connected. Okay. This wave X itself, if you are looking at it, formed an A. Okay. A, B, C, D, E. And then this completed B and this completed C. So this was W, this was X, and then we completing Y here in the form of ABC correction. This entire corrective pattern, which is very complex, honestly, this entire corrective pattern is very complex. मैं नोटपैड मैं ड्राइंग पैड पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है? If this is very complex, this is wave B or wave 2, which completed here. I'm saying that you do not get into the complexity of this internal. जाने दो, उसको जो भी कॉम्प्लेक्स करना है करने दो। You only understand one simple concept जो मैंने आपको ट्यूसडे भी सिखाया था। वो कॉन्सेप्ट किन किन लोगों को याद है? चैट पे डालिए, यहां पे लिखिए। आई वॉन्ट टू सी हु ऑल रिमेंबर्स दोज कॉन्सेप्ट विच आई हैव टॉट अक्रॉस। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? टू स्टेज कंफर्मेशन का। That if the last falling segment is retraced back in faster time, which was this leg, if retraced back in faster time, जो डाउन मूव था वो कंप्लीट होके अप मूव में शुरू हो रहा है। ये चार्ट को आप ध्यान रखना, व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर, जस्ट सिंपली बाय हार्ट इट। ये लग रहा है क्या निफ्टी के जैसा? ओके, इज इट लुकिंग लाइक निफ्टी? Every one of you, are you guys able to see it? I want you to participate here. Okay,
फैंटास्टिक। अभी इसके ऊपर मैं आपको स्विच कर रहा हूं मेरे आइडियल स्क्रीन के चार्ट पे। नाउ आई एम स्विचिंग हियर ऑन द स्क्रीन चार्ट। ओके, लेट्स लुक एट दिस चार्ट था जो मैंने टेक्स्ट बुक का बनाया। सोचिए ना, एक एक मूवमेंट मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है और मैं कोई आर्टिस्ट भी नहीं हूं। लेकिन यार सुबह से रात अगर इफ आई एम लुकिंग एट ओनली वन थिंग and trying to make sense out of it. It's in front of you. Now, this is precisely what I have drawn there. Can you see that? Each and every movement is precisely what I have drawn there. And we completed this. Here in the form of wave Y. After completing this in the form of wave Y, we are headed higher. And we have taken out the last falling segment in faster time. मतलब यहां से जो चीज शुरू हुई थी वो यहां से कंप्लीट हुई और उसका कंफर्मेशन हमें यहां मिल चुका है। अभी एक फाइनल पड़ा हुआ है, वन फाइनल डेस्टिनेशन दैट निफ्टी हैज टू ब्रेक ऑन द अपसाइड इज दिस लेवल विच इज द हाई ऑफ 25,222। ओके, 25,222 is the level that prices have to take out. If prices are not able to take out 25,222, गड़बड़ है। लेकिन आज मॉर्निंग का जो ट्वीट था, लेट मी जाओ जूम इन द चार्ट। आज मॉर्निंग का जो ट्वीट था वो 24,850 के ऊपर ही था, इस लेवल के ऊपर ही था कि बाय आपको 24,850 पे करना है एंड देन यू हैव टू राइड इट। नाउ टेल मी, if you bought at 24,850 and if you are trading positionally, will you be making a loss even if Nifty reverses? Or will you allow to lose on your winning position? If you are a smart trader, the simplest thing you have to do, and I keep telling my mentees also, you simply book partial profit and trail remaining. Book partial profit and trail remaining means that whenever markets are going up, जितना स्टॉप लॉस था उतने टारगेट पे आधा बुक करो, बाकी का राइड करो। यू डोंट नो हाउ मच यू कैन एक्चुअली मेक इन दिस ट्रेड। दैट इज द की फॉर मेकिंग मनी। when you're losing, you ensure that you're losing less, but when you're making money, make a kill. That is very crucial. So people who entered at 24,850 looking at the tweet, how to trail, that's a science I will not be able to teach you. There are multiple ways of trailing: stop loss, ETR, super trend, volatility based trailing, pivot based trailing. I'll not be able to teach you right now. So 24,850 is the level. We are already at about 24,000, 25,100, already making more than 250 points now. It's common sense. You cannot allow your position to lose. Which means that if from here Nifty goes to 25,200, you are making more. 25,300, you're still making more. If it comes down, you book your profit, get out of the table. But how to trail stop loss is very crucial here. You should know how to trail it. And if you are trading into options, there has to be a complete science of trading into options. आईवीज देखो ना, आज का पुट ऑप्शन किसी ने देखा? आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का वैल्यू ही डिटोरिएट नहीं हुआ, बल्कि पुट ऑप्शन क्लोजिंग एट द हाईएस्ट लेवल सिंस द मॉर्निंग एंड द मार्केट क्लोजिंग एट द हाईएस्ट लेवल। देखा क्या किसी ने? आईवी का चार्ट देखना चाहोगे आप लोग? पूरे दिन से मैं वही कर रहा था। I was just looking at the IV chart. I was looking at what's happening around and how it's moving, how it's doing. It is a fantastic chart. And उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मतलब खाली लेवल्स नहीं देखना है। जो भी हमारे त्रिशूल वाले पार्टिसिपेंट्स है, ब्रह्मास्त्र और त्रिशूल वाले, डू यू रिमेंबर आई हैव टॉट यू हाउ टू लुक एट आईवी चार्ट? गाइस, आर यू यूजिंग इट और नॉट? It is so damn important for you to use IV chart, otherwise you will be doomed. If you do not see the IV levels, if you do not see implied vol, you will be doomed. I don't want that to happen. You have learned about it. You should know how to play that IV, how to look at that chart. I'm just going to share it across, and you will be like, wow, this is phenomenal. अभी देखते हैं, चार्ट में दिखा रहा हूं आपको। लेकिन यहां पर
अगर आप देख रहे चार्ट पे, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक ऑन माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन हियर. Nifty is above 25,100 mark precisely as expected, and prices have retraced back the entire fall of wave Y in faster time. Further break about 25,222 is going to open up targets for 25,500 levels. Okay, 564 precisely. GAN level भी है वो 564. Correct me if I'm wrong. Okay, and events will result into volatility. तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो बिल्कुल रहेगी. तो यू कैन नॉट से कि ये ऐसे ही चले जाएगा, हु नोज, विद अ गैप, बट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी रहेगी. यू हैव टू बी ओके विद दैट. अगर मार्केट 24,800 गैप के साथ निकाल लेता है नीचे में तो गड़बड़ है. 24,800 अगर निकल जाता है तो गड़बड़ है. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. आर यू विथ मी, एवरी वन ऑफ यू? ओके, सो आई एम नाउ गोइंग टू शो यू एन IV चार्ट. Okay, this is an IV chart. If you're looking at this IV chart, this is a 24,000 put option chart. Okay, दिख रहा है आपको 24,000 put option, every one of you? If you're looking at 24,000 put option chart, you can clearly see that the price collapsed on the downside. वो जाने दो. लेकिन look at this. This is IV, implied volatility. You can see it at the bottom. This is implied volatility. वाओ, व्हाट अ राइज. 22 23 पे जा चला गया. मतलब पुट ऑप्शन का पूरे दिन में कुछ हुआ ही नहीं. लुक एट इट. ओपन हुआ मार्केट, ये 5 मिनट्स का चार्ट है. लो बनाया 12.55 पे. मॉर्निंग के 9:55 के बाद में, आई एम आस्किंग यू, फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM निफ्टी वेंट अप और डाउन. I'm asking you, simple people who have learned from the books of options and theory, I'm asking questions to you all. From 10 AM, what was the price of Nifty? देखते कौन कौन जवाब दे रहा है फटाफट. I want everyone to participate, and people on YouTube, do not forget to join me on Zoom and put your comments out there. Nifty was at what level at 10 AM India time? 10 AM पे निफ्टी कौन से लेवल पे था? 24,830. निफ्टी 24,830 से लेके 25,100 पे आया. ओके, 830 से लेके 25,100 पे आया, मतलब 270 पॉइंट्स आया निफ्टी ऊपर. पुट ऑप्शन में बुक में क्या लिखा गया? इफ निफ्टी गोज अप, व्हाट शुड हैपन टू पुट ऑप्शन? आई एम आस्किंग. डू यू एग्री विथ मी? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. चार्ट नेवर लाइज, प्राइसेस नेवर लाइज. भाव भगवान छे. This is the chart I am putting in front of you. Put should go down. Fantastic, Vidya, Paras, Das, Praful. Put should go down. सीखा है यार, पूरे बुक में सीखा है. यहां पर 10 बजे 12.60 है ऑप्शन का प्राइस, 24,000 का. क्लोजिंग कहां हुआ? क्लोजिंग दिख रहा है आपको? 14.65. ये 24,000 का पुट ऑप्शन है. विश्वास करते हो क्या? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हाउ इज इट इवन मेकिंग सेंस? सोचिए, ये तो कुछ भी नहीं. मैं आपको कितने चार्ट दिखा देता हूं ऑप्शन में, आपको विश्वास ही नहीं होगा. आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मैंने पैसा कमाया मार्केट के 250 पॉइंट रैली में, दैट टू बाय बाइंग पुट ऑप्शन. 24,500. 24,500 में 10 बजे का जो वैल्यू था वहीं पे रह गया. 250 पॉइंट मूव हुआ. वाओ, दैट्स क्रेजी. दिस इज व्हाट आई कॉल options craziness, but this is what I also call opportunity. This is what I also called opportunity. This is IV spike up. So do not look at it like a money making machine which you read on a textbook and try to implement here. It will not work. You need to learn it correctly from a mentor who is a trader,
and understands how this machine works. If you understand, you will understand this science. It is a science. And if you understand this chart, this is opportunity for you to trade. ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी बहुत सारा डिस्कशन मुझे करना पड़ेगा. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू हाउ दिस हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस, बहुत सारी चीजें. और आपको पता है आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी, आप मुझे सुन रहे अभी तक. इट्स ऑलरेडी एन आवर. It's already half an hour, not even an hour. So it's very, very interesting chart. I'm coming back to my original chart here. We have discussed that in much detail, how to go about it, how to trade that, how to explore that pattern. बहुत सारी चीजें हैं, वो हम डिटेल में अभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों, because I'm just showing you the application here. And look at this chart. This is precise wave pattern. अभी टारगेट डेरिवेशन, मैंने यही क्वेश्चन था मेरा. 26,000. My webinar topic was, will Nifty come towards 26,000 level? That's the question. सिंपल है. वेव ए है, बी मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ है, लुक्स लाइक. सी वेव ऊपर शुरू हो रहा है, 25,222 तक कंफर्मेशन और मिलेगा. यहां पर इफ आई डू अ ट्रेंड बेस्ड स्वीप प्रोजेक्शन of A wave on the upside, ideally from the completion, I'm taking from the extreme level. Okay, अगर मैं 61.8 भी देखता हूं, and do not go and buy tomorrow, क्योंकि ऐसा नहीं है, risk reward important है. If I look at this is 61.8% level. So even if the ongoing C wave is equal to, ठीक है, ongoing C wave है ना, which is going to be equal to 61.8% of A, we get a level of 26,200. इक्वालिटी तो जाने ही दीजिए, इक्वालिटी तक तो मैं जा ही नहीं रहा. ओके, एंट्री कहां थी? एंट्री वहां नहीं थी. एंट्री बाय वॉज 24,850. दैट वाज द आइडियल एंट्री. स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का था आपको अगर यहां पे बाय किया तो? सिंपल सा स्टॉप लिखा था मैंने, किस किस लोगों को याद है? एक लेवल लिखा था. फैंटास्टिक. 24,730. कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था? 120 पॉइंट्स का. टारगेट कितने पॉइंट्स के अगर वहां से वहां तक पहुंच गया तो? इफ यू लुक एट इट, द टारगेट इज 1350 पॉइंट. दिस इज माय स्टॉप लॉस. माय टारगेट इज हाउ मच? 1350 पॉइंट्स. इज इट गोइंग टू गो सिंगल वे? मे बी नहीं. मे बी माय स्टॉप लॉस get trailed. Maybe I get out of the market early on. The point I am trying to make is, you do not have to put brakes on profits. You need to keep riding it. Who knows if over the weekend there is going to be a peace talk? Who knows if over the weekend there is going to be an escalation further and US participation? No one knows. Event can result into short-term spiky movement, but eventually we are headed here. Are you with me? समझ में आया कैसे देखना है? So this is how you should approach trading. This is how you should understand trading. Your aim as a trader is not to make money. Your aim as a trader is to identify what is my risk. The only way you will be able to make money if you know what is your risk. That's the key. This is what I keep teaching in my mentorship master program. Understand the risk, understand the setup, process. If it's in your setup, take a trade. You can be wrong. Take a hit. I never claim to be 100% right. I always say use a stop loss. Remember, always. And I always say it's a probability. When it doesn't work, take a small hit. But when it works, make a killing. So if it is right and the pattern of neo wave works out the way I am thinking, we are headed there eventually. Event के कारण हो सकता है शायद नीचे आ जाए.
This view will be invalidated if Nifty breaks 24/7 24,460. ये ब्रेक हो गया तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। 24,460 ब्रेक नहीं होना चाहिए। And this is how you have to look at the charts, and this is how you have to play the game. Are you with me? Is it interesting what I did today, what I taught you today, what you learned from markets, what you see it? Are you guys liking this Friday at 4 masterclass webinars that I'm doing, the videos that I make, all of you? If yes, then put your comments down there, put your chats, put it across so that I know. Because यार मैं तो ट्रेडर हूँ, I'm a passionate trader. I mentor thousands of participants and I love doing that. क्योंकि अगर मेरे लिए काम कर रहा है this science, this will work for you also. And there is a question here, sir. I also want to learn NeoWave, how to go about it. So, guys, there is a question which has been put up. Rakesh, you thanks for the kind words. Very good science. बहुत ही कह रहे हैं. Sir, you are the master stroke like Tendulkar. Thank you very much. Glad to know that. Joseph, आप भी हो यहाँ पर. Lovely to see you also here. बहुत सारे comments आ रहे. And समय zone rocks 35 minutes हो गया दोस्तों. Okay, I've become your big fan, Santosh. आप थे last master class में, I know that. Fantastic. So दोस्तों, it's always amazing. Thank you very much. It's just passion. What you see is passion about markets, about learning, about training, about trading. It's passion that I do these things. What I also want to tell you, yeah, someone was asking the question, using any of your technical, what's the question? Yeah, so I use NeoWave as my main tool of forecasting along with time cycle. इस पे time का तड़का तो लगाया नहीं मैंने. So 4th of July is a very important date. I think जो major momentum बनेगा वो 4th of July के आसपास है, मतलब in that zone. We are just entering into the final phase of correction, which I think. So if we move down, then 4th of July तक रुकना पड़ेगा हमें. Okay, so there is a possibility we will go up again, start correcting sideways. 4th of July is a very important thing, and that's because of the time cycle. That's because of Hurst time cycle that I have talked about. Now, very, very importantly, along with this Hurst time cycle, you should also be knowing this NeoWave in detail. I've only taught you superficially the application of it, and I can be wrong. You need to know it in detail, which we are going to do on 12th, 13th of July. 12th, 13th July को एक मेरी Sutra waves की session है, and वो Sutra waves के session में हम NeoWave, Ichimoku cloud और Fibonacci trading system, two stage confirmation, ये सारी techniques को बहुत detail में करेंगे. And I'll show you how you have to identify those third wave stocks. जैसे मैं खिलाड़ी नंबर 1 35 times जीता हूं, how I do that. So I'm going to teach you all of those things in that Sutra of waves. And वो learning खाली 2 दिन के लिए नहीं है. If anyone is a part of it, उनको Elliott wave का access already अभी मिल गया होगा. My team will give it across to you. If you are not a part of it, you can register for the Sutra of waves program, and you'll get access to Elliott wave videos until Sutra of waves start. Once the Sutra of waves start, you will be able to see these 2 days of training session which we are going to have. उसके पहले एक प्री सेशन वीडियो भी मैं आपको दूंगा, which is going to be about how to look at the entire science of it. And link share हो गई है, and you can simply visit here and be a part of this. Plus we will be looking at complete system of 2 days of learning from that. उसके बाद एक follow up session होगा. Plus you will be given access to the traders community. ये सारी चीजें हम करने वाले हैं. ओके, सो यू कैन अवेल दी अर्ली बर्ड प्राइसिंग ऑफर, क्योंकि आज आप यहाँ पर हो, नहीं तो ये प्राइसिंग नहीं रहेगा. एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक अ वेरी क्विक पोल. इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक पोल विच पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम, which includes Trishul. Trishul is about options mantra, Elliott wave, and नीचे है. So options mantra का आपको वीडियो मिलेगा. So like I told you, options mantra क्या होता है? Options mantra is all about options, where you look at IVs. How do you look at IVs? How do you trade implied walls? How do you form a strategy around it? But अगर forecasting करना है ना आपको, तो forecasting करने के लिए it has to be with theory. Okay, poll is on in front of you. आप poll में participate कर सकते हो.
प्रफुल्ल, glad to also see you. हायर टाइम फ्रेम चार्ट एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बताया है. एंड जेपी सिंह, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए. माय कलीग विल हेल्प यू आउट विद दैट. जस्ट ड्रॉप योर नंबर हियर. Looking forward to Avinash कह रहे, looking forward for the Friday session as always. Glad to know that. Fantastic. और यहाँ पर, sir, can I learn NeoWave? I'm a fresher. Yes, you can still learn. Do not worry. As I said, I'll be giving you certain bonus videos which you have to go through it, and you'll be able to learn. एक काम करते हैं, every one of you, एक मास्टर क्लास भी मैं रखता हूँ सैटरडे को. कल भी एक मास्टर क्लास रखते हैं. एलियट वेव के ऊपर सीखना है, बेसिक्स ऑफ एलियट वेव, नॉट द रूल्स. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द रूल्स. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू एप्लीकेशन अगेन, क्योंकि रूल सीखने के लिए आपका टाइम लगेगा. आर यू अवेलेबल टुमारो मॉर्निंग, विच इज 21st of June, मॉर्निंग एट 11 a.m. 10 मिनट पहले जुड़ना, बिकॉज वी गो हाउसफुल. सो यू नीड टू बी, ज्वाइनिंग मी 10 minutes प्रायर. लिंक शेयर कर दीजिए. एक काम करिए, मास्टर क्लास की वी आर कीपिंग लिमिटेड सीट्स ओनली फॉर एलियट वेव को कैसे देखना है, जो मार्केट का मूवमेंट है. अगर थर्ड वेव है तो थर्ड वेव कैसे आइडेंटिफाई करनी है, हाउ डू यू प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑन एलियट वेव, हाउ डू यू डिराइव रिस्क रिवॉर्ड ऑन एलियट वेव. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हम करेंगे. हरीश सिंह, आप ब्रह्मास्त्र के पार्टिसिपेंट है क्या? फैंटास्टिक. ओके, देयर आर लॉट ऑफ चैट्स कमिंग अप. एंड मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर दिया तो एक थम्स अप दे दीजिए. एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, if you are loving what we are doing, just let me know. Is it fantastic? Okay, awesome guys. So I think आज के लिए इतना ही. We have done look at the markets. We looked at two-stage confirmation. Nifty is on a road. Market is on a tear. Unless the levels are broken, and trend is your friend. Remember that mantra. Trend is your friend. Trade in the direction of trend, and it is always amazing to have you guys all here. Thank you very much for listening me out. I'm going to be there. A poll is on going in front of you. Poll में participate करिए. And I'm going to be seeing you on Saturday morning. Do not forget to join early. If we go full, आप join नहीं कर पाएंगे. Thank you very much. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.